Last time we did LCM and HCF. Any doubts left now? Karishma? Suman? Rahul? No, sir. No, sir. Sir, one small doubt, sir. So final Yeah. step, I am getting stuck in over 5 digits, sir, in LCM and LCF. Give me the question. Give me any question, or I should give. Okay, I'll give you one question. So let's say we have 16. 6, 12, 18, 30, 36. Correct? So we'll take first 2 digits. 6, 12. So that means that is 1:2. So H1 is equal to 6. L1 is equal to 12. Shilakshmi, any doubt here? No, sir. Clear, no doubt. Second, let's take 18 and 30. And 18 and 30 means 3/5. 3/5. So that means H2 is again 6 and L2 is 90. Any doubt, Lakshmi? Yes, tell me. Lakshmi, you asked the question, where are you now? Yes, sir. Little here, network issue, sir. Okay. Any Till doubt? here I got, sir. Last step Okay, I'm not okay. getting. Up till here, no Till- problem, no? Okay. No, now sir. No, sir. 36 is left only, correct? So we'll take it later on. Let's conclude from here itself. Let's do like we do for 4 digits. H equal to H1 by H2. H is equal to 6/6. That is 1/1. Correct? Here, actually, what happens? You make a mistake. Yes, sir. What do? You do 6/6 is equal to 1. Remember, you always do. No, sir. I'm doing 1 by 1 only, sir. Okay, so No, that final mistake H, I do, sir. so then the final H is 6. Yes, sir. Second, final LCM. So it is also 12/19. Also 6. So what is this? 2/15. Because 6 2s are 12, 6 15s are 90. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So that Yes, means sir. 92s are 180. 180. Now, Yes. this is how we do if we had 4 numbers. So this was final result. But now we have fifth also. Let's say now new H. Again, you can do it. So new H is 6/36. 6/36. So 1/6. So that means HCF is equal to 6. And new LCM
is equal to 180 by 36. That means 180, 18 twos are, and 18 tens are, 5 by 1. Correct. 5 by 1 is perfect. Right. So if you cross multiply, 180 into 1 is 180. Now is it correct, Lakshmi? Yes, sir. So do like we do for 4 digits first, and then you can do for 5. This is all. This way also you can do it. Right? Any doubt now? Okay, sir. Okay, now we have very simple topics which is known as, first is fractions. Now this is generally in class 3rd also. And what is the questions generally they get? They get on addition, subtraction, multiplication also, and division sometimes. And how do they do is, suppose you have got 3 by 4 plus 1 by 3. Now this is a question of suppose addition. So generally what we do is we find a LCM of denominators. We are asked to find a LCM of denominators. So that is 12. In this case, there is no. And then we are asked that whatever is missing means we try to divide 12 by 4. So that means 3. So this 3 is multiplied by 3 times. Or you can say by the second denominator. Plus 1 is multiplied by another denominator. So this is generally we do. Now here kids get confused because first thing they have to find LCM. Now in this case there was no common factor. HCF was 1, but sometimes there is a HCF is also there. So that time LCM is somewhat less. Now Vedic maths, see, question is same, but we don't confuse them to find LCM and HCF. We say in denominator, multiply the denominators. Because try to understand, the age of a 3rd class student is just 8 years. They cannot assume and presume so many things. Okay, first find the LCM, then find this, then do this. So instead of that, in Vedic maths, it's very simple. Multiply the denominators and cross multiply or use Urdhva Sutra. See, you are going to do the same thing. Urdhva Sutra means 3 into 3, 1 into 4. See, result is again the same, 3 into 3 plus 1 into 4 and 12. But the way of approach is different. So they just have to multiply the denominators and cross multiply the numerators. Cross multiply the whole for numerator. Did you understand this? One example. Yes, sir. See, only approach is different. Definitely answer is not going to be different, or number of steps won't be more reduced. The only thing is they don't have to find LCM and then do the something, because this will happen. I'll show you some examples later. 7 by 8 plus 4 by 5. So very simple. 8 into 5, 40.
7 into 5, 35 plus 67 by 40. and if they are asked, if you are asked to find the mixed fraction, so you should know that also. If denominator is 40, that means 40 plus 27 by 40 or 127 by 50. So sometimes they ask to write in mixed fractions. So this is how you can write. Suman, there is a lot of disturbance. Please see to it. Yes, any doubt now? No, sir. Now see this question. 3 by 10 plus 4 by 15. See, earlier the both questions we were having HCF 1. So total was LCM. The product was LCM. Are you getting what I am trying to say you? HCF is 1 and the product is total LCM. Remember, product of two numbers is equal to HCF into LCM. We did this last time. LCM into. And now if HCF is 1, so product is totally Yes. LCM only. Na? Now see here, HCF would be there. Why? Because 10 and 15, they have common factor. 5 is common, 2 and 3. So 5 is your HCF and 30 is your LCM. So this is what is taught. Now here student gets confused sometimes. Now he has to do 10 into 3. So that means 3 into 3 plus 4 into 2 he has to do. And then he gets 9 plus 8 by 30. That means 17 by 30. And we say, in Vedic maths, we say, multiplication of the numerators, 150, and cross multiplication. So 45 plus 40. This is 95 by 150. Now you see that common is, you both comes under the table of 5. So 30 and 17. So this Sir, is 85, no? So 95 or 80? Sorry. 85. 45. Yes. Good. Got it? So this is your conventional method. And this is your Vedic mathematics method. So a student is not supposed to find LCM. Directly they can find multiplication. And is it clear? Sir, in the last step, we would ask the child to divide it by 5, right? Yeah, we divided by 5. Okay. Like, Okay. see why we divided? Because it was common. Na? We can further reduce it. Correct, sir. Correct. I wrongly wrote that time 95, it was 85. Any doubt here now? Sir, once explain conventional method. Three by 10. Okay, we'll take another question. Seven by 8 plus 4 by 5. Let's now here in this case, okay, I'll not take this because here HCF is 1. Let me take okay, if I take 12,
3/4, let's take. Now in conventional, we are asked to find LCM of numerator. Here we multiply n1 into you can say LCM divided by D1. And here you write N2 into LCM divided by D2. That means basically whatever is less. For example, what is LCM of 8 and 4? 8. Yes, Correct? sir. So Yes. that means N1 is 7. 7 into LCM is 8. D1 is also 8. Plus N2 is 3 and LCM 8. Correct? 3 into LCM is 8. D2 is 4. Sorry, I think this should be reverse. Whatever is the less, na? Because here it should come. Okay. Correct, So sir, correct है, correct. So 7 correct है. into 1 plus 3 into 2 divided by 8. So that means 7 plus 6 by 8 is 13 by 8. The problem is only this much. A student finds difficult to understand this. Now is it clear? Suman? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We say multiply the 32 and cross multiply. So 28 plus 24. What is that? 52 divided by 32. So do you have anything common in 52 and 32? Sir, Can be divided by 2, sir. so 26, 16. Can it be further reduced? Yes, 13, 8. Yes, sir. So this is the difference. See here, you get answer here itself, but the only thing is you have to further simplify or reduce. Now clear, Suman? Yes, sir. Very good. Similarly, for the subtraction also, it is the same. You have to cross multiply and do the things. I'll give you one example. 3 by 10 minus 4 by 15. So what we do? 1 by 30. 50, 1 by 30. 45 minus 40, 5 by 150, that means 1 by 30. Otherwise, we would have taken one extra step finding LCM. What my point? That is the difference. Without finding LCM, you can do the fractions. Any questions now? no, sir, clear. And suppose sometimes only sometimes you get doubt in mixed fractions. Suppose it is written 3, 1 by 6. Not sure. Okay. 5, 4 by 7 plus 2, 1 by 2. So first you can
simplify also, or you can make this way also. 5 plus 2 here and 4 by 7 plus 1 by 2. Got it? Or you could have done this way also. 28 plus 4, 32 by 7 plus 5 by 2. Whatever the way you want. So 7 plus, this is 7 twos are 14. 8 plus 7. So 7 plus 15 by 4. Now, One thing, yes, Suman. 7 is correct. Sir. 7 5 is 35 plus 4. Sorry? 7 5 is 32 by 7 is correct, no, sir? 30. Sorry, 35, It 39. should be 39. So these are the two different methods. First, you can go by this also, or this way also you can simplify. So what is this? If answer they are expecting in mixed format. So 7, and here also it is bigger. So you can have 1 plus 1 by 14. So 8, 1 by 14 can be written. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? Again, there are no exercises given for this because these are something which is very simple, but only we need to understand how we can simplify these things. But very important, students do get confused because I have already taught class 3rd. So they have this problem. Multiplication would be very easy. Division would be very easy because in division you'll be reversing, right? So we have not solved that also. So multiplication could be, you can very well understand, simply multiply. Or here also you can do, so 1 by 12. Right, if it is question of division, sorry. So that means reverse it. Right. To make it multiplication. So 3 by 16. Any questions you have now? So there are some examples given. Please try those only. And if you get book of class 3rd, okay, I'll also write. I also need some exercise. I'll add it. Any question now? No, sir. Not it. See, No, sir. we learned earlier that was something new in Vedic mathematics. These are now because we have learned all those things, Urdhva Sutra and everything. Now we are using this applications of Urdhva Sutra. I was going through one group. I don't know, many of you might be there. So today they were using Antraya Doshke in your geometry. I'll share you the examples also. It was like in multiplication, we were getting that was 13 and 17.
So we already know when these are adding up to make 20 or 10. So simple multiplication, and this is, so we have already covered, but we have to remember this. So this, okay, let me show, let me give you. So always, wherever you get some knowledge, take it. Now it is like use of Vedic mathematics. The side of a rectangle is 17 m, right? And 13 m. Now find the area. There are, so what is area of a rectangle? Length into breadth. One, So Jalili, 1/2 length into sorry. length into breadth. So now just see length and breadth. We never thought of this, but when we see now, we know that 3 and 7 are adding up to make 10. So we can just apply Antaryor Dosh. Right? Then it was a square has a side of 25 m. Sorry. So find area. So area we know 25 square. Now we know how to find square of 25. 625. So these are called as applications. See, presence of mind should be there. So somebody has used this in using this application in geometry. Now, right angle triangle, they are saying the base is 42 m. Perpendicular height is 29 m. So what is area? Yes, Half base into height. half base, correct. Now, if you are asked to find this, you'll think it is a big calculation, but just see. Now it is 21 into 29. So what happened? 2, 9, 2, 2, 1, 9. So 6 Correct. and 0, 9. Got it? So some small points now you have to, so this is very important. Everything would be used. See, ultimately, I told you that day also, like people who shift after class 10, what happens? Generally maths fail or maths less marks. So they drop maths and they move to arts. They move to commerce. And if family is very high, they move to medical. But do you have alternative for maths? No. Because after arts, after graduate, so what is arts? You'll go for BA. What after BA? You don't want to become MBA. You cannot get admission if you are not good at maths in a good college, because for good college, you will have an entrance test and every entrance test will have maths. So that means what we left, that was useless. Talk to people. That is what happens. So why life gets spoiled? Why BA people are not able to go for management courses? This is the reason why they are not able to crack that exam. Medical. Yes, they have left maths. So bio they took as an option. What about physics and chemistry? Still they have to do the calculations. Still they have to do the numericals. What will come in the numericals? Same. Pi r square. ये तो हर जगह आएगा area for circle or something multiplied by pi. You talk to some professor of physics or chemistry, they will tell you, yes, students who have, because they teach both engineering as well as medical students, so they'll give you the difference.
A student who is from engineering, his numericals are strong, and who is from medical only, they don't have. So what happens? They are good at theoretical parts, but at the time of numericals, they are poor. So overall, they do very good in bio, and these two subjects, they go down. All right. So we have to understand one thing: maths cannot be avoided. Everything works on maths. Correct? Any doubt? Any questions you have? Another very small topic of percentage comes. We often get confused in this. What is 11% of 150? Or what is 10.5% of 168? Or what is 90% of 360? Yes, we often get confused now. So what is it? Is very simple formula. Always remember A% of B. Both A and B are unknown to you. Correct? What is that? Multiply both, divide by 100. Finish. Now this multiplication, now we know. We know how simply we can do. First case, 11 into 150 divided by 100. So we can go this 11 into 15, we know, because this is a concept of 11 multiplication. So 165 divided by 10 means a dot. Got it? See, this is very percentage you have to calculate every time, every moment you have to find out. Second, 10.5% of 168. So let it be 105 into 10. Okay, we'll make it 1000. So now we know 105 into 168. How can we find? Urdhva Sutra, 3 by 3 multiplication, and we'll get the answer. Third, 90 into 360, again divided by 100. One gone, this gone. Now you did 9 multiplication, or it is a single, so you don't have to worry that much also. 9 6 are 54, 9 3s are 27, 5 goes here, 3 2 4. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Any question? See, this is basic question which comes and we are not able to solve. Why we are not able to solve? Because we get confused. How to multiply? When to, so How to always how to remember. find a discount? Sorry, Discount कैसे find करेंगे सर? discount भी आएगा. For example, how come? Sir, अगर डिस्काउंट यही है 5% डिस्काउंट, फिर तो यही हो गया, फिर तो परसेंटेज ही आ गया ना. पर एक चीज और होती है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट. You know, one thing is, there are two terms I'll explain you. One is 20% discount. Yes, sir. One is 20 plus 5%.
So what is this? Successive discount. Sorry, 25. Successive discount, sir. हाँ पर ये क्या है? इसकी वैल्यू 25% है. No, sir. 25 से कम आएगी. Yes, this is now 20% of what? Suppose आपकी टी शर्ट 900 की है. So now 20% डिस्काउंट तो सिंपल हो गया. 20 into 900 upon 100. So 180 आपने लेस करना है. डिस्काउंट आपने निकाल लिया. ठीक है, 20% निकाल लिया. कितना होता है? Yes, Rahul. See, percentage you got it. You got the value. So आपको पे कितना Yes, करना sir. है अगर? So that is 180 माइनस कर दिया 720. But अब again 5%. 24%. So okay, I'll tell you. वो 5% किस पे होगा? डिस्काउंट पे होगा ना. 720 पे. वो 5 into 720 divided by 100 है. अब 36 sir. वैल्यू देखो उसकी. 36. कितना आया? 36. 5 ones are 5 twos are ठीक है. 2 ones are 2. तो आपको कितने की पड़ी? 900 में से 720 पहले निकल गए, 36 और निकल गए. कितना हुआ? Sir, 360, sir, actually. सॉरी, 5 into 72 is 360. 100 भी तो है. 5 ऑलरेडी कट हो गया ना 10. 686. 684. 684 सर. नहीं समझे अभी. 720 माइनस 36 आपका 684 आया. करेक्ट. अगर यस. अगर ये डिस्काउंट, अब देखो फर्क कहाँ है. अगर ये 25% होता तो कितना आता? 25 into 900. 225 रुपीज होता सर. Are you getting? अभी हमारा कितना लेस हुआ? 675 रुपीज में पड़ता और इसमें 684 में हुआ. ओके. इसमें 210 लेस हुए और इसमें 225 लेस हुए. करेक्ट. फर्क कितना आया? So this is 15 not रुपए. this 5% means 20 का again 5. ओके. 20 का 5 कितना हुआ? 20 का, if it is 20 total, so 20 का 1 कितना होता है? नहीं समझोगे. ऐसे अभी क्लियर हुआ? वैसे इट इज नॉट 25 here. 25% डायरेक्ट होता है. इसीलिए you might have seen sometimes add is 80 plus 20%. अगर आप ऐसे कर रहे हो तो 80 plus 20 तो 100 होना चाहिए. बट 80 plus 20 100 नहीं होता. तो 20 का 1% is 0.2 ना. ओके. Got my point? यस यस सर. Now is it clear, Rahul? यस सर. ये तो बिजनेस माइंड है सर. आप बिजनेस वाले ही हो. मेरा टेस्ट ले रहे थे फिर. नहीं मेरा business mind ही नहीं है. कस्टमर को 25 की. मेरा बिजनेस हाँ? माइंड नहीं है.
People who know me, they say तुम्हें बिजनेस करना ही नहीं आता. चलिए और बताएं. Any question? Yes, any question? So your fifth step is also over. So any doubt you have? Sir, one question in division. Very. 7873 divided by 118. मैंने 2-3 बार ट्राई किया बट नहीं. 7873 Divide by 118. कौन सा लगेगा इस पर? ये सुमन, लक्ष्मी, परवर्त है ना. लक्ष्मी, राहुल करो. ठीक है. Up till here it is correct. Karishma. Yes sir. Yes Then sir. 7 you get it down. Yes. Again प्रॉब्लम कहाँ आती है इसमें? क्या हम इसको अलग अलग लेते हैं 7 8 56 और क्या इसको हम टोटल करते हैं? अगर हम इसको अलग अलग लेते हैं, आपने ये क्वेश्चन गलत किया था, मैं बता देता हूँ. अब जी. आपने क्या किया था? 7 8 56 करेक्ट. 5 इधर गया, and 12 then बना. 12. Yes. आपने हाँ इसको यही किया 1 मैं. बार 2 बार 6 बार कर दिया था. Correct sir. How can you go to the third digit? So in actual you have to do this. 7 ones are 7. No, Okay, ऐसे भी कर. you can do Okay, this. okay. ठीक है. सर एक्चुअली मैं इसी में कंफ्यूज हो रही हूँ. मैंने उस दिन में आपको एक फोटो भेजा था ना, आप उसके बाद वही कॉल. मिस्टेक मुझसे हो रही बार बार. भाई अब उसमें तो कुछ और भी मिस्टेक थी, वो अभी मैं नहीं बोलना चाहता. तो अगर वो नहीं करना तो 26 आप यहाँ भी कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है. बट आप थर्ड पे नहीं Okay. जाएंगे बिकॉज ओनली 2 है, यू हैव टू टेक एट अ टाइम. थर्ड यू कैन नॉट Okay. ब्रिंग इनटू. और आप कहते हो तो इसको 1 रहने दो और उसको 56 यहाँ कर लो. सो व्हाट? हाँ. सॉरी 1 ठीक है. 7 होगा. सॉरी 7 ones are 7. Yes. that is also correct. But Okay. this is correct. Up till 7 you can write. You cannot bring this in between. Okay. This was your mistake. So that's why I wrote ऊपर से जो क्वेश्चन आपने भेजा, अब that was 22 by हाँ 22. मैंने आप मुझे 88 दिखा सर वो रहे हो. मैंने फोटो हाफ भेजा था. मैंने फोटो हाफ भेजा था सर को कैसे पता चलेगा? सर सर. बट अंतर्यामी कौन है? ये जो सर आप हो, बट सर ये जो चीज आपने अभी बोली है ना, आई गेस मैंने पहले कोई वीडियो में मैंने मिस किया होगा बिकॉज नेटवर्क इश्यूज हो रहा है. ये थर्ड पे जाना नहीं है तो मेरा मुझे पता ही नहीं था. क्यों? हमने कभी भी नहीं किया. हमने कभी भी नहीं नहीं सर किया. ऐसे नहीं वही मैं बोल रही ना. मैंने नहीं सुना. मैंने ऐसे नहीं बोला, आपने नहीं बोला. आंसर बट ये स्टेप इसीलिए सर, लेकिन ये थर्ड पे नहीं जाना है. मैंने नहीं, पता नहीं क्या मैंने मिस्टेक किया. बट मैं अभी भी डिविजन पे. और सर सेकंड वो जो 2 फ्लैग वाला है ना, उसमें मुझे बहुत डाउट्स हो रहे हैं. वो मतलब नहीं हो रहा है मुझसे सर. 2 सुन फ्लैग लो, वाला. उसमें क्लैरिटी दे देता हूँ. जब 2 फ्लैग्स होते हैं यहाँ, लेट्स से एग्जांपल दे दिया, करेक्ट. यहाँ कुछ भी है, लेट्स से फर्स्ट फ्लैग आया A, सेकंड आया B, करेक्ट. ठीक है, अभी यहाँ तक. जब फर्स्ट होगा, एट फर्स्ट टाइम यू विल मल्टीप्लाई with first. Let's name this C, let's name this D, let's name this A, let's name this B. एंड बी. ठीक है. ओके. अब ऐसे ले लो इसको, ओके. या ऐसे रख लीजिए, सिंगल C है. तो
फर्स्ट टाइम आप इसको करोगे करेक्ट। वर्टिकल, सेकेंड टाइम ये मैंने 4 बार लिख के दिए हैं एग्जाम्पल, सेकेंड टाइम क्रॉस करेंगे, ओके थर्ड टाइम हम बी और डी को करेंगे सिर्फ। ठीक है। एक स्टेप और आया था कुछ एक में, दैट वाज व्हेन यू हैव ई आल्सो, तो उसमें हम ए को अवॉइड करेंगे। तो हम ए को नहीं लिखेंगे, हम करेंगे करेक्ट। ए नहीं, हम सी को अवॉइड करेंगे, ऊपर के दोनों Okay. रहेंगे डी और ई, ओके 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 ओके। राइट। ये आपने बोला था, ये याद है, बट सम करते टाइम नहीं याद आता है। अब उसका क्या कर सकते हैं, मैं कैसे करूं, प्रॉब्लम उसका एक ही आंसर है ना, पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो सब हो जाएगा। हाँ तो वो करते टाइम ही तो डाउट आता है फिर सबसे ज्यादा, फिर कंफ्यूज हो जाते मैं तो। शुरू कर दो पढ़ाना। हाँ सर, मैं सेकंड बुक पे तो हूँ अभी फिलहाल, और मैं ऑफलाइन स्टार्ट क्वेश्चन करती 66 and remainder 85. नहीं ठीक है, 66। शी मेड सम अदर मिस्टेक। हाँ सर, अभी समझ में, मेरा आंसर आ रहा था 77 क्वेश्चन। अभी डाउट क्लियर हुआ या नहीं? हो गया सर। चले आगे। यस सर। चल 66 and 85 remainder is sir. सब ठीक है, मैंने चेक नहीं किया सर। Yes, quotient is 66 and remainder 85. चलिए, एनी फर्दर डाउट्स? No. Sir, I have a small doubt on subtraction, sir. So, as we know that like 1000 minus 460, that we know it. But how about if we get in a different digits? टेल मी। Like 898 minus 540, like that. How we What, have to do? Means we have two methods for this. Na? okay. One is Shuddha method, Yes. second is Vinculum method. Very If you are good. teaching class 3rd, then only Shuddha method. If you are teaching class 6 plus, then both methods. This is only for bases and sub-bases. Specifically, Yes. these are general techniques. थर्ड क्लास की बुक ही अब प्रिंट होने गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी, करो। Got it? Yes sir. चलिए, so let's move to a very Yes, important topics. Start with square roots. Sir, Yes. एक क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड आउट करने का कोई वैदिक मैथ्स में तरीका है? आगे अभी करेंगे हम, फिर भी क्वेश्चन Okay, भेज okay, देना, क्योंकि कई Okay, sir. टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट सूत्रा से समझ भी नहीं आता, and we'll do it, Okay. but polynomials will be doing. Yes sir. करिश्मा, मैं आप क्लास लूं या आपके आंसर्स दूं? आदमी दे दो। तो कर लो, मना तो मैंने किसी को भी नहीं किया कभी भी। नहीं इसमें सर, बट हाँ भी तो नहीं बोला। पूछने के लिए कुछ है ही नहीं मैं आई ऑलवेज, आज भी देखो राहुल ने भी ज्वाइन की, राहुल है वो है, दूसरे ने आज नहीं की, ही वाज समवेयर एल्स। आई डोंट से नो, सी व्हाई आई टेक स्मॉल बैचेस, कि किसी को भी प्रॉब्लम आए वो दोबारा ले ले। नहीं सर, अभी मैं कैसे सेकंड बुक पे पहुंची हूँ ना, तो
कोई अभी बात ऐसे हो गया कि मैं 5th बुक का पहले प्रैक्टिस करूँ कि वापस 2nd बुक का पहले करूँ, तो एक तो हूँ लेस कॉन्फिडेंट और फिर उसमें ज्यादा पैनिक हो जाती हूँ मैं उस चीज को लेकर। फिर आपने क्लासेस कैसे ली? आपने पीछे बोला मैंने क्लासेस ले ली। सर मेरा वही फर्स्ट बुक क्लियर हो गया, अभी मैं 2nd बुक पे हूँ, मैं सिखा रही हूँ। अच्छा सर, डोंट वरी, आपका नाम रोशन करूंगी मैं। आप अपना करो, मुझे नहीं चाहिए नाम, बट एटलीस्ट चलो कोई बात। So see, there are now there is something called as perfect squares, something called as imperfect squares. So squares or square roots, what we are finding? We are doing square roots, but उसमें find Okay. करना है वो सब. So ठीक है. square roots can be found by mere observation, but which one? See, if I say to find a square root of 9, now this is perfect square, then only we are getting, na? Correct. Right. Yes, sir. Yes. Perfect, sir. Yes, sir. What about for 8? Two root two. There are Two different root two. numbers, This is 2.1 imperfect. also, 2.214 also. Okay. So now you remember that table, what we learned? 1 Square. square is Yes. equal to 1. 2 square is equal to 4. 3 square is equal to 9. 9, 4 square is equal to 16. 16, 5 square is equal to 25. 25, 6 square is equal to 36. 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, 9 square is equal to 81. 81, Here is equal to 100. 100. Just observe the last digits. What conclusion you make? Yes, Suman. Rahul. Yes, sir. Just observe it. अगर लास्ट डिजिट 1 9 और है 9 का लास्ट जिस बोलिए बोलिए अक्रम. 1 और 9 का लास्ट डिजिट सेम है. 2 और 8. सर 2 सर यही 4 कि अगर मतलब लास्ट डिजिट जैसे मतलब 6 है तो उसका अगर रूट करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट 4 होगी, मतलब समथिंग ऐसे. Okay. So now इसका मतलब क्या? देखो, या तो 1 से एंड हो रहा है, कोई भी नंबर 2 से एंड हुआ, नहीं. that means if a number is ending with 2, That is imperfect. that is imperfect. समझ गए? कहीं भी नहीं हो रहा 10 तक, तो आगे भी नहीं होगा. 3 से हो रहा है? Correct. नहीं. नहीं. 4 से यस 1. Yes. तो 2. 5 से only one time. Yes. 6 से 1 1, 2. 2. 7 से no. No. 8 से no. No. 9 से yes. Yes. So if a number is ending with 2, 3, 7, 8, it is Imperfect. imperfect. इसके अलावा अगर 10 की डबल जीरो की बजाय if a number is ending with single zero or odd number of zeros, मतलब 0 या 000 या 5 zeros, it will be imperfect. Clear? Yes. But
ऐसा कोई तीर नहीं है कि yes if it is ending with 1 it would be a perfect square. Sorry, 1 is perfect. 11 है, 21 है, 31 है, 41 है, भैया 81 है. So 1 और 81 में सिर्फ यही है. So ये टॉपिक आगे समझेंगे आप. So अभी इतना समझ आ गया. नंबर जो एंड है that helps us to solve the problems. So very first दिमाग में ले आइए 2, 3, 7, 8 और सिंगल. और 0. ये तो बिल्कुल नहीं होंगे परफेक्ट. अगर परफेक्ट नहीं होंगे तो वी कैन नॉट सॉल्व. नाउ टू सॉल्व द परफेक्ट हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं. सपोज 9 को ही सॉल्व करना है तो आप क्या करते हैं, 3 into 3, दिस इज फैक्टर्स ओनली ना. 36 को करना है तो क्या करते हैं, 2 then 2 then 3 into 3. ये आपने फैक्टर्स ही तो बनाए. फिर आप कहते हो ओह ये डबल, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 और 3 6 आपका वो हो गया. दिस इज हाउ यू डिड. बता दो. सो यस सर यस. व्हाट अबाउट बिग नंबर्स, 100 तक का आपको आता है, इससे आगे चले जाएं. अब ये देखो हाउ टू सॉल्व. दिस इज नोन एज विलोकनम सूत्र. दैट मीन्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन. सो अब पेपर में आ जाता है बच्चों को ये, दिस इज अ 8th क्लास टॉपिक. दे आर आस्क्ड कि इसका निकालो आप स्क्वायर रूट. हल क्या है उनके पास, वो स्टार्ट करते हैं इसके फैक्टर्स बनाने. 2 into डिवीजन करते रहेंगे. सो ये क्वेश्चन तो आया 2 मार्क्स का, इस पे लगा दिए 5 मिनट. लगेंगे अक्रम फैक्टर्स बनाने में. यस सर, यस सर. ठीक होगा. और गलती भी करेंगे बच्चे. चलो नहीं ठीक, मैं कहता हूँ गलत नहीं भी करेंगे. हाँ फिर जी. हमने एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5 मिनट का मतलब आप समझ सकते हैं कि वी हैव ओनली 1 minute फॉर 1 मार्क्स. वी कैन नॉट अफोर्ड. जी. सो दिस टेक्स टाइम. और इसको अभी देखना 1 सेकंड में आप चेक कर लोगे. कैसे, फॉर स्क्वायर्स मेक राइट हैंड साइड से चलें, 2 का पेयर बनाएं, बाकी जितने भी हैं. यहाँ 111 है, क्या पता यहाँ 111 होता तो वो नेक्स्ट में डाल दीजिए. फर्स्ट स्टेप हो गया. एनी डाउट इन दिस? No. So step 1, sorry, divide the number into 2-digit group from right hand side. अच्छा हाँ, why we are solving, because it is 6. अगर ये यहाँ 4 होता तो हमें पहले ही पता इट इज इनपरफेक्ट, सो हम करते ही नहीं. करेक्ट. मे बी 6 वाला भी नहीं होता कई बार, बट एटलीस्ट सेकेंड स्टेप, पहले राइट हैंड साइड को लो 56 को. ऑब्जर्व द लास्ट डिजिट. लास्ट डिजिट क्या है, 6 है सर. second thing, we have 2 pairs. आंसर भी 2 डिजिट का ही आएगा. 6 कब आता है हमारे को लास्ट में, बताइए. 4 से और 6 से. Correct. So that means either my
square is 4 or it is 6. Any doubt up till here? No. No, sir. Yes, any doubt? No, sir. Third point. Now check 11. 11 में 11 कहाँ आता है हमारा? 3 square, 4 square between. यहाँ पर. Okay. 3 square and 4 square के बीच में. Correct? Correct. Yes, sir. So इसको कंक्लूड कर देते हैं. सो अच्छा, we always take, यहाँ पे लिखिए, we always consider lower. Okay. तो 3 कंसीडर कर लो. सो या तो मेरा आंसर 34 है या मेरा आंसर 36 है. Got it? Okay. Any doubt up till here? No, sir. Got the why I am saying 34 या 36? Because 4 को जब स्क्वायर करोगे, देखो 34 को जब स्क्वायर करोगे, पहले तो यूनिट प्लेस को करोगे ना, तो 6 आएगा कि नहीं आएगा? 4 4 6 आएगा सर. Yes. 4 4 16 मतलब. और 36 को भी करोगे तब भी तो 6 6 36 आएगा. हाँ. यहाँ तक क्लियर? Yes. Now what we'll do, multiply these two. 3 into 4 12 आ गया. Yes. Compare this with 11. हमारा नंबर क्या है? छोटा है या बड़ा है? 11. छोटा है. हमारा तो नंबर 11 है ना. So 11 is less, so we'll choose lower one. 34 is the answer. Any तो 56 का 5 को कुछ नहीं करने का अपने को ना. Okay. पेयर बना दिया ना. 06 होता तो भी. Correct. सर लास्ट स्टेप एक बार दोबारा रिपीट कर दो प्लीज. जो हमने फर्स्ट डिजिट्स जो कंपेयर किए कि किसके बीच में आता है, उनका प्रोडक्ट लेना है. एंड दैट प्रोडक्ट इज कंपेयर्ड विद आवर फर्स्ट पेयर. We'll solve one more, then you'll understand. Take a screenshot first. ओके. Question is 4 4 8 9. First step 89. Sorry, first step तो आपने डिवीजन वो कर दिया, राइट? सेकंड स्टेप में आपने कंपेयर करना है 89. 9 आ रहा है. 9 कहां पर आता है आप बताइए अकरम? 3 into 3. It will be 3 or 7. गॉट सी. 9 एंड कहां होता है? ये 3 into 3 का मतलब नहीं है. 9 comes here, 9 comes in. 7. Yes. इसीलिए वो टेबल कहा था. इफ यू रिमेंबर एट द टाइम ऑफ स्क्वायर्स आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली, प्लीज रिमेंबर दिस टेबल. दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल यूज दिस टेबल while finding the square roots. Got it? Yes. Okay. So मेरा नंबर या तो 3 होगा या 7 होगा. Sir, I got answer as 63. मैम एक मिनट, अब सबको समझाना तो कर रहे हो ना. जब आपका नहीं निकलता, अभी रुक जाओ, स्टेप वाइज चलेंगे.
Okay, sir. Third, 44. See, Akram, first we compare the first pair, this pair. Then we compare this pair. But this pair we don't, here we take only the last digit. Here we compare complete number. Yes, sir. Got it? Okay. 44 कहाँ आएगा? 36 and 49 के मतलब बीच सर. 6 मतलब square, 6 square and 7 square के बीच. So इसका मतलब my answer is either 63 or 67. I take the lowest. 7 I will not consider. Correct? ये Yes, sir. correct हो गया. Now 6 into 7 is 42. My answer is bigger or smaller than this? Compare with 44. Smaller. Bigger. So I'll choose Okay. the one. So answer is 67. 67. आपने 63 किया था कृष्णा, Yes, sir. Because मैंने compare करने में भी. इसीलिए कहा ना सुनो. Yes, sir. देख लो 67 को करके अब. Correct. 42 and 42, 84 and 49. So 9, 8, 14, 4. Wow. Now is it clear? One more. अब देखो इजी सा क्वेश्चन देता हूं. 15625. बहुत मजे वाली बात है. फर्स्ट स्टेप तो हो गया. सेकंड स्टेप 25. अब इसमें क्या है? डू वी हैव एनी ऑप्शन? No. इट विल एंड विद 5 ओनली. 5. याद है 5 कहां पे आएगा? सिर्फ 5 के साथ ही आएगा और कहीं आएगा ही नहीं. सो नो कंपैरिजन. 156 कहां आएगा? ट्वेल्व एंड 13. सी अब आपके पास 100 तक का टेबल है. 12 square and 13 11 square is is 121, 12 square is 144, 13 square is 169. correct. So 12 and 13 में आएगा. So let's multiply 12 and 13. क्या होता है 12 and 13? 156. 156. Same. So what we choose? Lower. Okay, so 125. Okay. So 125. हमें वो भी नहीं करने की जरूरत थी इनका मल्टीप्लिकेशन. दो आगे दोनों में से एक लेना, लोअर ही लेना है हमें हमेशा. Now is it clear? Yes. Yes, sir. Now Yes. solve one question. 69169. Okay, नहीं अभी नहीं है क्योंकि अभी आपके लिए बड़ा हो जाएगा. Let's solve. 5476. Please solve, everyone. अरे इतनी देर नहीं होगा. 6 किस में आएगा? 4 and 6. So 4 या 6. सेकंड 54 कहाँ आएगा? 7 or 8. 7 and 8. What is, so we take 7 lower, 74 या 76. Now 7 and 8 is 56. Our number is less. So 74. 56 or 74. Yes, Akram. Suman. Yes, sir. Now see visualization. Now 5 4 7 6 उनको नंबर नहीं आते, उनको 3 डिजिट तक के ही आएंगे. So how easily they can do it? 3249. Solve.
67. You check it. 57. 57. Yes, Suman. 57, sir. Got it. Good. Okay. 2025. I hope you remember, but try to solve this way. So this is 45. 95. 55, sir. 45. Who gave 95? No, sir, 45. Yes, Karishma. Yes, sir. 60, 84. $78. Instead of telling me check, so you'll be more confident. You have done scared, so why asking Yes, me? sir. Check. So be confident then, Khudeja. आवाज इतनी slow क्यों? चलिए हो गया 4 digit सबका. Good. 1 2 3 2 1. अब बड़ा करते हैं थोड़ा. 21 123 21. Okay, first you do. It will be either 1 or 9. Second step 123. 123 किसके बीच में आएगा? 11 and 12. 11 is 121. So I take least 111 or this. Now 11 into 12 is 132. My number is smaller, so that means 111. Clear or not? Yes, sir. Yes, sir. एक question last. 2 4 3 3 6. Solve it. $156. Yes, others. Yes, sir. 156. 156, sir. Yes, 156. चलो अब आपको एक न्यूज दूं. See, you can find out whether the number is imperfect just by observation, but you cannot find whether the number is perfect by any hook or crook. You can never, right? So the topic is how to check whether number is perfect or not. Check the large digit. Come again. Large digit check करके भी कर. The last But digit, होगा या नहीं होगा? one होगा. वही, that's what I told you. See, you can, if it is imperfect, you can say yes, it is imperfect. But
by checking the last digit, you cannot say yes, it is a perfect. It may be perfect. Okay. So आप imperfect का Don't तो say so. confirm है. You are never confirmed in life for perfect. First rule. If number is ending with 1, 4, 5, 6, 9 or even number of zeros, then it may be perfect. Please understand, it may be perfect. If number, it may be perfect, so we'll do further testing. Correct? If number is ending first, understand, then I'll give you time to write. There 7 or odd number of zeros, then it is 100% imperfect. सर 4 नहीं आएगा इसमें ना? एक मिनट, 4 लिख दिया, 7 की जगह, ठीक है. 2, 3, 7, 8 स्टेटमेंट समझ आ गया? इज इट क्लियर? यस करिश्मा. Yes sir. Suman. Yes, sir. Yes. Why I am saying, see, this is very much clear. Any number, you take 22, you take 12, you take 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, कोई भी perfect square होता है? नहीं होता. 33, 63, 43, 13, कोई perfect square होता है? नहीं होता. 37, 47, 57, 67, 17, कोई perfect square आज तक सुना है? नहीं होता है. 18, 28, 38, 48, not. But yes, 1 is a perfect square, but 11 is not. So number ending say, it is not confirmed that the number is perfect. Only it is confirmed that it is not perfect. Clear? Anyone has any doubt, please ask right now. No, sir. Okay, so take a screenshot or whatever. I am removing. Rule number 2. See, this is, we check the unit place. Now check the tens place. If last digit is 1, 4, and 9, this is there. In such, if last digit is 1, 4, and 9, the tens digit should be even. See how you need not to remember all such things. Even kya, just memorize 1. कौन कौन सा स्क्वायर होता है? 181. So 1 में 0 भी even number है, 8 में 81 में 8 भी 64. That is also Eight. Even. even. 4 के आगे even. 4 के आगे 0 है तब भी even, 0 भी even. So tens digit should be even. Then it may be perfect. Again, it is maybe. Why? See the example.
01, 81, but 41 is not. 41 में 4 भी तो even है, 21 में 2 भी तो even है. Are they perfect squares? No. So the 10th digit should be even, then it may be, but confirm नहीं है. But if 10th digit is odd, then it is 100% imperfect. Example, 11 से लेके कहीं भी कर लीजिए, 11, 31, 51, 71, 91, 111, 131, 151. Are they any time perfect? No. Got it? Any doubt? B. If unit digit is 6, tens digit should be odd, and it may be. But if it is even, then 100% not. Is it clear? Example 36 का याद करो. 3 and 6, sorry, 6 के आगे 3 odd है. सिर्फ 6 नहीं होता है, even नहीं होता है. Even तो 100% नहीं होगा. 26 नहीं होता, 6 नहीं होता, 46 नहीं होता, 66 नहीं होता है, 86 नहीं होता है. 36 is possible, 16 is possible. 1 भी odd है, 3 भी odd है. So when it is odd, it may be perfect. But if it is even, it is 100% non-perfect. Is it clear now, everyone? Yes, sir. Take the screenshot. This is rule number 2. Once I'll write down all the rules. So rule number 2 का third part. If last digit is last year means unit पे 5 है. Can anyone tell me here? टू आएगा सर, इसके आगे 2 होना चाहिए. हाँ 25 ही होगा. If 10th place is other than 2, then imperfect या non-perfect. So only 2 होगा तो हम सोच सकते हैं. परफेक्ट हो सकता है. तो सिर्फ 25 ही होता है, पर 125 कर दो तो नहीं हुआ. So 2 भी हर केस में तो नहीं हुआ ना. 625 होता है, 325 नहीं होता है, सिर्फ 25 होता है. Is it clear now? Any doubt? यस सर. Rule number 2 का last part, zeros. Again, if unit place is 0, try to understand. तो टेंस पे भी 0 होना चाहिए, तो हो सकता है, या और odd number of zeros हो. इसका मतलब कि 10 पे भी 0 हो और 2 और 0 हो. So either the number could be, for example, 100, then it is possible. 1000 तो हो ही नहीं सकता.
अब 1000 का क्या मतलब हुआ कि यू हैव even number of zeros after unit place, so that is not possible. Clear? Any doubt? थ्योरी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा, नो सर, नहीं देना ध्यान? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, बोल। आई अंडरस्टूड यार, मजा। चलो, रूल नंबर 3, सी इफ, ये इतने रूल्स क्यों लगाए गए हैं? कहीं भी इम्परफेक्ट पकड़ा जा सकता है। थर्ड रूल को कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। दो डिविजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं हम, डिविजिबिलिटी बाय 4, so if it is 4, देखो ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं, इवन नंबर्स भी हो सकते हैं। ऑड में द आंसर शुड बी ऑलवेज 1, even 0. I'll give you an example. सबसे छोटा नंबर लेते हैं 4। 4 क्या है? इवन। इवन। Even. 4 को डिवाइड करो 4 से तो क्या आता है? 0। 0। तो इट मे बी करेक्ट। 4 के बाद आता है Yes. 9। 9 क्या है? ऑड। अगर इसको Odd. 4 से डिवाइड करो तो व्हाट यू गेट? रिमाइंडर 1। 1। कैन ऑल्सो बी अ परफेक्ट स्क्वायर, बट इसके अलावा सोचिए 16 आता है, तब भी देखो इवन है 16, तो 0 ही आया। आप उसके बीच के नंबर्स देखिए, 10 में क्या आया? 10 वाज अ इवन नंबर, रिमाइंडर क्या आया? 2, सो यहीं का क्रॉस। इफ इट इज इवन नंबर, द रिमाइंडर शुड बी 0 on divisibility by Okay. 4, then only you can think that it might be perfect. And if it is an odd number, the remainder should be 1. Any remainder other than 1, it is imperfect. Is it clear or not? Yes. नो सर, रिपीट अगेन स्टेटमेंट। अगर divisibility by 4 करना है हमने, correct? If a number Yes. is odd, then remainder 1 आएगा तो वो perfect हो सकता है। Other than 1, देखो दोबारा नंबर्स लेते हैं। 4 से करना है, 4 से ऊपर वाले नंबर ले लेते हैं। पहले 4 लिया हमने, 4 तो इवन है, तो 0 ही आना चाहिए। 0 आता है, इसीलिए परफेक्ट है। 5 नंबर, 5 क्या है? ऑड। ऑड में क्या? 1 आना चाहिए, 1। पर 5 जो है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है सर। नहीं है ना। यहाँ में भी आ रहा है, इस पे में भी आ रहा है। हमने 5 को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, करेक्ट? नो इश्यूज। 6 यस सर। क्या आया? 2 इवन है, 2 Two. आया, सो ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। 7 कितना आया? 3, ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। 8 इज इवन, क्या आया? 0, इट कैन। 9 क्या आया? 1, सो इट कैन One. राइट। 10 ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। जो कैन भी है वो या तो फर्स्ट स्टेप पे खत्म हो जाएंगे या थर्ड पे, मतलब कहीं ना कहीं एंड होते चले जाएंगे। व्हाट द पॉइंट? बट अदर देन को सॉर्टिंग हो रही है। सी यू कैन नॉट फाइंड, दैट्स वेरी मच क्लियर, देयर इज नो मेथोडोलॉजी टू फाइंड
अब परफेक्ट आप बता नहीं सकते कि इज इट अ परफेक्ट और नॉट। आपने अभी छोटे छोटे नंबर्स किए हैं, बड़े नंबर्स पे आप कैसे देख लोगे, कैसे याद करोगे? सो यू हैव टू चेक यूजिंग दीज 4 टेस्ट। गॉट इट? देन divisibility test second, that is known as divisibility by 8। again दो ऑप्शंस हैं, नंबर ऑड है और इवन है। if it is odd it should have remainder only one। for example 9, now 9 is a perfect square, 1 आता है देखो। 25 है, it is okay, 9 के बाद 11 ले लेते हैं। 11 में ऑड है बट आंसर क्या आता है 2, so it is not 13। 4 not there, 15 not there, 17 not there। even way you can have the answer should be either 0 or 4। चेक कर लीजिए आप। सिक्सटीन 8 2 16 0 20 अच्छा, और अगला 64 8 8 64 64 0 राइट। और इसके बीच में कौन से नंबर आते हैं, कौन सा टेबल आता है बोलिए? 100 8 से डिवाइड करें तो 9 कितना आता है? 96। 96 के बाद 4 रह जाता है। Got it now? yes Any doubt now? No, sir. Last test is known as your digital root। So in digital root, now here also आप उसी टेबल का सहारा लें, सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि बड़े नंबर्स तो आप देख सकते। सो लेट्स कम बैक टू टेबल अगेन। इसका डिजिट सम कितना होगा? 1, इसका 4, इसका 9, इसका 7, इसका 7, इसका 9, इसका 4, इसका 1, इसका 9, इसका 1। सो इसका मतलब इफ डिजिट सम इज 1 4 7 9, ये 4 ही आए, इसके अलावा कोई आया? Sir. So let's write down. If digit sum is 1 4 7 9, it may be perfect. If it is 2 3 5 6 8, then 100% non-perfect. Any doubt? So these steps you have to remember. These are the steps to find। और आपने इसको मिक्स नहीं करना है, ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट को थर्ड में कर दिया, थर्ड को फर्स्ट में कर दिया। नो, आइडियल वे यही। हाउ डू वी चेक? सी नाउ एग्जांपल। समटाइम आई एम like 771 आ गया। Now rule number 1, it is ending with 1, so it may be yes or no? Am I right or not? Yes Akram? क्या परफेक्ट सर? Sorry, परफेक्ट हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं?
परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता ना, मे भी कैसे आएगा? कैसे नहीं हो सकता, आपको किसने बोला? डिजिटल रूट से। तो पहले डिजिट सम पे पहले चले गए, मैंने तभी बोला हूँ स्टेप बाय स्टेप ओके आपको सर, चेक करना है, यू कैनॉट सी। सॉरी सर, आपको समझो बात सॉरी को, सॉरी सर। कई गलतियां, अभी मैं डिजिट सम का भी दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट ओके स्टेप सर, आपको सॉरी। यही करना पड़ेगा कि एंडिंग विद दिस। सेकेंड स्टेप देखो, अभी डिजिट सम की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ। रूल नंबर 2 आपको याद होगा, या तो 1 होता है परफेक्ट स्क्वायर या 81 होता है, मतलब इवन नंबर होता है तभी होता है। नाउ दिस इज 10th प्लेस इज ऑड, सो इट इज नॉट परफेक्ट। फिनिश, कंक्लूडेड। एक जगह भी नॉन परफेक्ट आ गया तो इट इज कंक्लूडेड, ये क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन दिखाता हूं अभी, 2209। यस राहुल बताइए अब। रूल नंबर 1, इट इज 9, सो करेक्ट। एनी Yes, sir. डाउट? 9 कब आता है? आइदर इट इज 9 और 49, 7. दोनों में इवन होता है, यहाँ इवन है, तो रूल नंबर 2 भी ठीक है। रूल नंबर 3, डिविजिबिलिटी बाय 4, इट इज अ ऑड, रिमाइंडर इज 1, so rule number 3, A part perfect. Rule number 3, E okay. Rule number 4, आपका digit sum 2, it is 4, it is also perfect. So as per this, it can be perfect here. Again, अभी भी मैं can be लिख रहा हूँ. Please try to understand why I'm not writing. This you have to be careful. You cannot write it 100%. Until unless you find it, you can only segregate. Ki yes, it is not perfect. I'll give you one more example. One, 8, 3, 6. Please solve this. Yes, Akram, Rahul, Suman, Karishma, Lakshmi. Yes, Rahul, Akram. यस सर, कर रहा हूँ। रोल नंबर 1 2 पास होता है। Rule number 1 पास हो गया। जस्ट चेक करो। रूल तो सारे पास हो गए सर। रोल नंबर हो गए? यस सर। क्या परफेक्ट स्क्वायर है? 44 के करीब। चलो हम उससे ट्राई मार लेते हैं। नहीं है सर। इसका मतलब क्या आएगा? 4 या 6 सर। 4 या 6। 18 किस में आता है? 3 और 4 के स्क्वायर 4 और और 5 के स्क्वायर में। तो मतलब 4 का ले लेंगे, इसका मतलब 44 या यस सर। 46। यस सर।
ठीक है, अच्छा 4 और 5 का मतलब होता है 20, सो 18 कम है, जी 44 होना चाहिए। अब एज पर दिस जी रूट यस सर, 44 बट का 44 का स्क्वायर 1936 आ रहा है सर। सो अब देखो चारों रूल्स ओके थे, इसके बावजूद ये गलत हो गया। नाउ यू अंडरस्टूड। सो यस सर। यस सर एक मेरी रिक्वेस्ट, इससे निकालने के बाद ऑलवेज वेरीफाई। 99.9% क्वेश्चन गलत नहीं आता पेपर में, बट व्हाई टू टेक दैट 0.1 रिस्क आल्सो? गॉट द थिंग्स? एनी डाउट नाउ? नो सर। सर तो जो आंसर अभी ये प्रोसेस से करने के बाद आंसर 44 हुआ, तो उसको डिजिट सम से डायरेक्ट वेरीफाई किया तो भी आंसर मैच करना चाहिए ना? किससे डिजिट किससे? सम से, डिजिट सम से क्या क्या, क्या वेरीफाई करेंगे? डिजिट रूट से sir। डिजिट रूट से कैसे स्क्वायर रूट को तो ये वेरीफाई 4 करेंगे? and 4 8, अच्छा तो उसका क्या नहीं निकालेंगे? सर, जो आंसर अभी यहाँ पे 44 हुआ, हाँ, डिजिट रूट कैसे, इसका अंडर तो रूट 9 कैसे निकालेंगे आप? 1 + 8 is 9, 9 + 9 is 18, तो ये 3 आ गया फिर। 9 and 9, क्योंकि 9 + 9 18, उसका मतलब 9, अंडर रूट ऑफ 9 is 3, और आपका 3, यहाँ 8 आ रहा है, करेक्ट तो वो तो वैसे ही गलत आ गया ना। करेक्ट सर। ठीक है, सर सो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, देयर इज नो परफेक्ट वे टू फाइंड आउट द इनपरफेक्ट। सो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, चूज द इनपरफेक्ट और चूज द परफेक्ट वन, सो यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। और 8 तक के स्टैंडर्ड में परफेक्ट ही दिए जाते हैं, इनपरफेक्ट नहीं दिए जाते। इफ इट इज इनपरफेक्ट और if it is asked find the square root of till 2-digit decimal, so that automatically means it is unperfect. सो जाओ, got the things? हमने 15 मिनट लेट शुरू किया, तो 15 मिनट और तो चलेंगे। एनी डाउट? So नो सर। how to find imperfect squares for smaller numbers? See, smaller के लिए तो हम compare कर सकते हैं। For example, now you have to remember the formula. If n is your number, you have to divide it into such a way, x plus minus y, where x is perfect square and y the leftover. Further, अगर इसको करें तो this is x plus minus y under root x. This formula you have to remember. For smaller one, जहां तक आपको गिनती आराम से, जहां के परफेक्ट स्क्वायर आप याद कर सकते हो, let me show you. Take a screenshot, I'll tell you. For example, अब आपके 1 is a perfect square, 2 is not, 3 is not, 4 is not, 4 is perfect, ठीक है, 5 is not, 6, 7, 8, 9। अब इनके बीच का किसी का चाहिए आपको, सपोज 8 का निकालना है आपने, so you can write it like 9 minus 1. So 9 is your x, y is this. So what after that? X minus y upon 2 under root x. So 9 का मतलब 3 minus y 2, sorry, y is now 1, 2 into 3. So
3 minus 1 by 6. Now 1 by 6 क्या होता है? What is the value of 1 by 6? 0.166. So 3 minus 0.166. So that is, you can find out. So 2.84. Clear or not? Yes. So you have to remember first thing. क्या याद करना है? देखो first 1 by 2 की वैल्यू कितनी है? 0.5. 1 by 3 की वैल्यू कितनी है? 0.33. 1 by 4 की वैल्यू कितनी है? 0.25. 1 by 5 की वैल्यू कितनी है? 0.2. 1 by 6 की वैल्यू है 0.166. 1 by 7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857 if you remember. 1 by 8 की वैल्यू कितनी है? 0.125. 1 by 9 की कितनी है? 0.111. So these 9 values should be remembered. Basically कहा जाए तो ये तो आपको आती है सबको 8 ये. So 1 by 6 और 1 by 9 याद करनी है. Is it clear? Now let's find out one more. Yes, sir. I'll take something जिसका 2 से मैं निकाल सकूं. I'll tell you. Let's take 7. Suppose 7 का निकालना है. I can do either 9 minus 2 or I can also use 4 plus 3. But ideally, y should be minimum. So I have to avoid this. This is right approach. This is wrong. So sometimes what happens, people do like this also. It is not good. Right? In case of, if you have to find 3, you can have 4 minus 1 or you can have 1 plus 2. But again, this is correct because y is minimum. Right? So let's solve 9 minus 2. So 9 minus 2 का अगर है तो under root x means 3 minus y 2 into 3 हो गया आपको. So this is gone. So it is 3 minus 1 by 3. What is 1 by 3? What is the value of 1 by 3? 0.33. 0.23. अभी मैंने आपको बताया 0.33. So that means it is 2.67. 667. Right? Yes. Is it clear? But ये वहीं तक possible है जहां तक आपको याद हो सकता है. If you are asked about 82, yes, you can do it because you know 81 plus 1, 1112 or 111. This is possible because you know what is 100 plus 11, Yes, ma'am. but not beyond that. So beyond that, we have different formula. We have 2 methods. One is division method. Now, division method is not a Vedic method, but still will do because why I have covered that in this book? Because that is important because they cannot understand in their book. There is one loophole they don't write down. And one thing to understand our Vedic mathematics method, first they should very well understand that division method. Like Suman got the problem in LCM HCF because he is not clear about the conventional method. Even you have to teach the students the same. You cannot say, I will not teach because I am teaching Vedic mathematics. No, you have to. This is part of the curriculum, right? Okay, do one question, then we'll move further. This formula you'll remember now.
Yes, sir. Okay, find the value of 50 under root 50. See, now it is very well understood that it is imperfect because single zero is there. It's 7.071. Others? Yes, sir. 7.071. Karishma? $87. Sir, Yes. root 15 can 36 minus 14. Sorry, 36 plus 14. देखो अगेन y कितना बड़ा हो गया 49 माइनस प्लस 1 ऐसे तो आप 64 माइनस 14 भी कर सकते हो Depend on y. मैंने कहा ना y शुड बी मिनिमम सी अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 64 और 81 के बीच का लेते हैं कोई ठीक है लेट्स से 72 72 माइनस सॉरी 64 प्लस 8 और 81 माइनस Yes, sir. 9 हो जाएगा आप दोनों करके देखो Yes. ये ज्यादा अप्रोक्सीमेट आएगा ये थोड़ा सा फर्क आ जाएगा सी ऑलवेज सी कि y शुड बी मिनिमम कर सकते हैं आप पर आंसर का क्या है अच्छा चलिए आई एक्सप्लेन यू द रीजन आल्सो अब आप 2 का निकालें सिर्फ 2 का और लिख के रख लीजिए अपने पास आंसर कल हम 2 का दूसरे मेथड से निकालेंगे उसका डिफरेंट आएगा बिकॉज अप्रोक्सीमेशंस विल चेंज ना यहाँ 2 का क्या किया आपने 1 प्लस 1 कर दिया 1 भी आपका क्या है सो आपने क्या किया 1 प्लस 1 बाय 2 1.5 आ गया अंदर अभी मुझे ये बताइए कैलकुलेटर से देख Yes, sir. लीजिए या किसी चीज से भी देखिए व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 बोलिए
बताइए, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 2? राहुल 1.414 समथिंग सर। अरे अभी हमने क्या निकाल दिया 1.5, क्या ये गलत है इसका यस मतलब? सर। दिस इज अप्रोक्सीमेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और 2 को आप ऐसे कर लेते, 4 - 2, ठीक है? तो क्या आ जाएगा, देखो 2 - 2 बाय 2 × 2, अगेन क्या आ जाता 1/2, 2 - 0.5, 1.5। तो क्या 1.5 होता है? Yes. गौर करके- Approximation. हाँ, इसीलिए जब, और Yes, sir. इट डिपेंड्स, कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया अप टिल 3 डेसिमल डिजिट्स या 2 डेसिमल डिजिट, आप इसमें बताइए दूसरा डेसिमल क्या लिखेंगे? 3 अगर आपसे पूछ लिया तो आप क्या लिखेंगे? 1.5000 हो गए सर 3। बताइए, है राहुल? सपोज Yes, sir. हमसे पूछा गया तो दैट मींस आवर मेथड, दिस मेथड कैन नॉट हेल्प अस फॉर दैट। सिर्फ राहुल और अक्रम क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी सो गए क्या? क्लास बंद कर दें आपकी? नो सर। कुछ जवाब दे दो, इतनी देर हो गई। They both are discussing and you all are sleeping like। अगर आप यहाँ एक्टिव नहीं हो तो क्लास लोगे कैसे? सर 87 जो किया था हाँ, क्या हुआ उसका? उसका आंसर 9.333 आ रहा है सर। ठीक है, होगा इतना ही। सी 87 में क्या करना है हमने? 81 + 6। बस बेस्ट है, क्योंकि 100 - 13 इज डिफिकल्ट। करेक्ट। यस। तो ये करिए, बिल्कुल ठीक आएगा। 9.33 sir. परफेक्ट। एनी डाउट नाउ? और करना है आगे? No, sir. No, sir. हाँ, राहुल ने ना कर दी। राहुल चलो, फ्राइडे क्लास पहले लगानी है। रूल, ये पहले रूल ठीक तरह से करना पड़ेगा सर। नहीं, रूल नहीं, वो रूल पे इतना फोकस मत करो, रूल को ज्यादा स्ट्रेस मत लो। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। और ठीक रट्टा मारना भी मत। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, सिर्फ आपको 10 पहले 10 डिजिट्स का समझो उसको मेंटली, सब रूल्स रटे जाएंगे। देखो, फर्स्ट डिफिकल्ट नहीं रहा, सेकंड डिफिकल्ट नहीं रहा। सेकंड के लिए क्या ऑब्जर्वेशन है? 149 की ऑब्जर्वेशन है, 6 का पता है, 5 का पता है, खत्म। सिर्फ डिविजिबिलिटी तो रह गया याद करना। हाँ, yes. और आपको अगर डिजिटल रूट है वो वहीं से कैलकुलेट कर लो। तो रट्टा मारोगे तो सब कंफ्यूज हो जाओगे। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग। नहीं होता, अंडरस्टैंड ही करना। ठीक है, चलो। यस करिश्मा, Yes, sir. एनी डाउट्स? यस सर। यस, नो पूछिए सर, डाउट। अभी तक तो नहीं। आज तो इजी था करिश्मा। हाँ सर, इजी लगा। अगली कस्टमर। Imperfect squares is very nice, sir. हाँ, Imperfect squares is a very magical way. It is through that formula. which formula? This one? Just, yes, sir. 87. ये It's really very nice. this is also for small numbers. Tomorrow we'll do the big. For big, that is division method. That is a conventional mathematics. But why I do is because people are not clear about that fact. So we cannot teach further. So when we have to teach further, I need to teach that basics first. उसका कमी मुझे पता है, मैंने उनकी बुक्स को चेक किया था, तो मुझे ही नहीं समझ आया उनकी बुक में से, क्योंकि दे राइट लाइक यू हैव टू एज्यूम, प्रॉपर इमेज कमी है इसमें। मैंने सीबीएसई की बुक्स देखा था। चलिए, नो इश्यूज। ठीक है, फ्राइडे का क्या करना है? फ्राइडे विल बी देयर और नॉट? Yes, sir. We'll take lecture, sir.
हाँ होली है, बाद में फिर लास्ट मोमेंट पे मुझे बोल दो कि मैंने नहीं आना, मैंने नहीं आना, और रह जाते हैं 2 बच्चे, तो फिर मुझे भी, बिकॉज सैटरडे आई वोंट टेक, आई विल बी इन नेपाल। सैटरडे संडे मेरा मुश्किल होगा, वहां अगर नेट नहीं मिला तो नहीं हो पाएंगी। देखते हैं अभी। ठीक है सर। तो फ्राइडे आई वांट टू टेक, देखते हैं। चलिए ठीक है, ओके जी।